News coming in about India's COVID preparedness. Union Health Minister Mr. Mansukh Mandaviya is currently chairing a meeting with officials of the Indian Medical Association ahead of the Pan-India mock drill set to take place tomorrow to review India's COVID preparedness. As per the sources, he will give a direction to doctors to not spread unnecessary fear among the people through their statements. The Health Ministry will also be seeking, or in fact asking the IMA to give a list of doctors who will be authorized to speak on public forums related to COVID-19 issues. Let me in fact go across to Sabyasachi, who is joining us on the phone line for all the updates coming from that meeting. Yes, Sabyasachi, what can you tell us and our viewers about what to expect from the interactions that are currently underway between the Health Minister and officials from the IMA? Well, absolutely. See, this meeting has been called in by the Health Ministry, and in this meeting, the focus is regarding the IMA setup, where the Health Ministry has clearly instructed the IMA to give a list of doctors who will give information about the COVID-related issues, and the Health Ministry have asked not to spread any sort of unnecessary information. That could create panic in the country. And also what the Health Ministry has instructed the central government-run hospital to be fully prepared. Tomorrow, the Health Minister Mansukh Mandaviya is likely to visit the government-run hospital to take stock of the COVID-19 situation, what kind of preparations have been done so far. So we have seen that in countries the COVID cases have been increasing, and that is the reason why the country is in the full prepared mode, and that is why the IMA officials have been called in to give the Health Ministry a list of doctors who will be speaking on the COVID issue, and also to tell them strictly that no information that would create panic in the country should be spread across by the IMA. Absolutely, Sabyasachi. In fact, it would be worth reminding our viewers that the IMA itself had come out with a press release last week putting out a series of guidelines. Now, with India on alert owing to the unprecedented rise in COVID cases in China, the Union Health Ministry has announced a slew of measures to ensure there's proper preparedness at our end. The centre has asked the states to ensure adequate availability of oxygen as well as cylinders in the event of a sudden surge. States as well as union territories have been asked to hold mock drills at all health facilities on Tuesday, which is tomorrow. The states are prepared for the drill at government hospitals tomorrow, which is when the mock drill is scheduled to take place. See, from what we had and what we have augmented in terms of infrastructure, health infrastructure, the equipments, the medical equipments, the medicine and the health personnel, I should acknowledge and thank our Honorable Prime Minister and our Honorable Chief Minister for their proactive measures and for their immense help. We are able to increase in all these facets at least by 5 or 6 times. So this is a huge thing, and we are doing a mock drill to ensure that everything is in a working condition. आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार सभी जिलों में इंक्लूडेड सभी मेडिकल कॉलेजों में हम एक साथ मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं। कोविड प्रबंधन के सारे संसाधन जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं और हमारे वेंटिलेटर्स हैं, इंक्लूडिंग स्टाफ जो चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो या हमारे चिकित्सक हैं, सभी लोग एक साथ उपस्थित होंगे और सभी उपकरणों को स्टाफ के साथ हम जांचेंगे। यदि कोविड का इमरजेंसी में कोई मरीज आता है तो किस प्रकार उसके साथ हम व्यवहार करेंगे। So what are some of the important developments on the COVID front in the build-up to the mock drill that will be held tomorrow, which is the 27th? Now, Mr. Mansukh Mandaviya, the Health Minister, is meeting IMA officials even as we speak. There have been 2 positive cases that have been reported at the Kolkata airport. Remember, it's part of the guidelines to screen random passengers. 4 new cases have now been reported in Delhi, the national capital, as well. And in Gaya, in Bihar, 4 passengers, all of them foreign passengers, have tested positive. In Karnataka, strict curbs for New Year's Eve have been announced by the state government. And in Tamil Nadu,
Transit passengers will be tested at the airports in the state as well, as per prescriptions on the part of the Civil Aviation Ministry as well as the Health Ministry. Now, as the COVID scare grips different parts of the country, several states have, of course, upped the ante in terms of their own levels of preparedness to fight the pandemic. The Uttar Pradesh government has also issued an alert. Are citizens actually following the norms that have been prescribed on the ground? Here's a status check from the Lucknow airport. कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एयरपोर्ट पर भी अब स्क्रीनिंग पे चल रही है। आरटीपीसीआर टेस्ट उनका किया जा रहा है और पॉजिटिव पाने पर उन्हें रिपोर्ट के आने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है और उसके बाद आगे की कार्रवाई हो रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, 2 दिन पहले ही उन्नाव में एक मामला सामने आया है। जो शख्स विदेश से दुबई जाना था, उसकी आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके पहले आगरा में एक विदेश से लौटे एक शख्स की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। 2 नए केसेस भी उत्तर प्रदेश में आए हैं और इसीलिए जो एक्टिवनेस है वो ज़्यादा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर जो विदेशी फ्लाइट्स है उससे जो पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग जो है एयरपोर्ट पर ही की जा रही है। Now, 4 positive cases were also reported in the national capital, Delhi. But during this festive season, how are citizens on the ground actually following the prescribed norms? Let's find out from our ground report here. We are here in Lakshmi Nagar area. It's one of the busiest market areas where you can see behind me the people who are still today they are here in the market to buy stuff, and this is one of the places where a lot of student population also resides. So let's try to find out if they are aware of the situation or not. While you can see there are some people who are still wearing masks, but there are some people who are still not wearing masks. क्या नाम है सर आपका? ललित। तो आप यहाँ घूम रहे हैं या सामान लेना है? पीजी हमारा यहाँ। अच्छा, तो आप ये मास्क लगाए घूम रहे हैं, क्या आप प्रिकॉशन के तौर पे है या फिर आप कोविड के स्केयर से आप मास्क लगाए घूम रहे हैं? प्रिकॉशनरी है। अच्छा जी। तो आप जैसे कोविड का डर है आप में, क्या अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? ऑब्वियसली अब ऐसा न्यूज़ है कि फैल रहा है तो प्रिकॉशन तो लेना ही होगा। You see that there are some people who are still wearing the mask, but there are people in the market areas who are still not wearing the mask. Although this is a precautionary measure that the people are taking. We are here in Lakshmi Nagar, reporting from Lakshmi Nagar, where you can see people are there in quite a number. There are large number of people who are still not wearing the mask, although there is because of the lack of awareness. कोविड-19 के संभावित खतरे को देखते हुए पंजाब में भी तैयारी शुरू कर दी गई है। हम इस वक्त मोहाली सिविल हॉस्पिटल में हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उसके लिए एक बाकायदा वार्ड अलग से बनाया गया है। करीब 70 जो बेड्स हैं उनका इंतज़ाम मोहाली ज़िले के सिविल अस्पताल में किया गया है और हम इसी एक आइसोलेशन वार्ड में हैं जो सिविल अस्पताल में बनाए गए हैं और आप देखिए कि यहाँ पर करीब 70 की संख्या है जो हमें जानकारी दी गई है। वो बेड यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार हैं और जितने भी बेड हैं सभी पर जो ऑक्सीजन की सुविधा है वो भी मुहैया यहाँ पर कराई गई है। आप देखिए कि ये बाकायदा बेड हैं और इनके साथ ही जो ऑक्सीजन है उसकी भी उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। 70 बेड एक जिला अस्पताल में रखे गए हैं और ये बताया गया है अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कि ज़रूरत पड़ने पर बेड्स की जो संख्या है इसको और भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पर तमाम जो बेड्स हैं, ऑक्सीजन डेडिकेटेड जो बेड्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है और करीब 70 बेड यहाँ पर बनाए गए। इसके साथ साथ चाहे टेस्टिंग की बात हो और पंजाब सरकार ने यह भी कहा है कि जो पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके जो सैंपल हैं वो जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में भिजवाए जाएं, उसको भी फॉलो किया जा रहा है। इसके साथ साथ टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। मास्क या जो दूसरी हिदायतें पहले हमने देखा था कि मैंडेटरी कर दी गई थी, इसको फिर से मैंडेटरी भी किया जा सकता है।